like we'll be doing maps in the next class, है ना? Maps हम बाद में करेंगे. अभी we'll be starting with gatherings, right? So give me 1 minute, like I have to upload that PPT only, and then we'll be starting. Just 1 minute. Good evening, good evening. Chemical weathering was going on. Somebody wait a minute, I will be visible in a while. Now I hope I'm visible to you people as well. Huh? Okay, now. And beginning with our topic of weathering. We were of cycle. Types of mountains. Okay. So we want to start with. We have done chemical weathering. Solution and observation have been completed. Yes. Okay. So how was the Sunday? All good? कुछ लोग तो मिलने मिलाने भी गए होंगे. Vaspa is saying yes. Welcome Amisha. Amisha कहाँ थे आप इतने दिन से? अच्छा boring. अरे boring क्यों था? Enjoy करो, like you people get 1 day. Enjoy किया करो. Watch some web series, कुछ movie. हाँ? अच्छा busy. Samriti was so busy. Okay. So enjoy in your own way. कुछ नहीं तो पापा मम्मी के साथ ही घूमने निकल जाए. बाकी तो कोई बताएगा नहीं किसके साथ घूमने निकलते हैं. केमिकल वेदरिंग, ठीक है. तो वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स. एक तो कैसे रिक्वेस्ट बोलो केमिकल वेदरिंग, राइट. So we have done the solution and we have done the oxidation, है ना. इसमें मैंने आपको बताया था rusting is the major process. That's how the weathering occurs. So it's very simple कि जैसे क्या तालाब में एक मछली खराब है तो पूरा तालाब the fish one क्या बोलते one rotten fish. So this is because one iron particle gets rusted, which leads to development of cracks and leads to breaking up of entire rock structure. यानी एक पार्टिकल में जंग लगने से यहां से अगर ये पार्टिकल निकल जाए. अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन अमीशा, कोई बताओ भाई अमीशा को क्या पढ़ा रहे हैं. ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे लगते हैं. रामायण सुनने के बाद कोई कहे सर सीता कौन थी? सीता कौन था? तो ऑक्सीडेशन, आई होप कि आप सबको समझ में आ चुका है व्हाट वाज ऑक्सीडेशन. यस. तो इट वाज ऑल रिलेटेड टू द एडिशन ऑफ, देखो जैसे केमिकल फॉर्मूलाज जनरली याद नहीं करने होते, बट अगर आयरन को ऑक्सीजन मिले तो एक कंपाउंड बनाता है Fe2O3. ये जो कंपाउंड है बेसिकली दैट इज वेयर द रस्टिंग अकर्स. और ये जो नया कंपाउंड है is very weak and can be easily dusted out. ये ना बहुत जल्दी डस्ट बन के निकल जाता है, leaving a gap which can lead to cracking of entire rock. आगे बढ़ते हैं कार्बोनेशन. तो गिव द हेडिंग कार्बोनेशन. तो एज द नेम सजेस्ट. हाँ सर मुझे पता है कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग चल रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें आप क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि सर कुलभूषण सर की क्लास जस्ट अभी छूटी है. ओके. देखो हमने सॉल्यूशन कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, अब हम कार्बोनेशन स्टार्ट करते हैं. केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन. ठीक है, मतलब मैंने कहा ना मेरी बातों को लाइटली लिया करो. आई नीड समथिंग टू जो करो.
My words are never meant to insult anyone. कोई भी, हाँ, never. ओके, चलो, तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस पर आते हैं। तो क्या, सॉरी, कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन क्या प्रोसेस है? कार्बोनेशन इज द एडिशन ऑफ कार्बन, एज द नेम सजेस्ट। ये क्या है? तो कार्बोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन, है ना। तो जनरली जो कंपाउंड है, जो एक लाइम, लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंपाउंड है, दे हैव द टेंडेंसी, बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में CO2 नाम की गैस इवॉल्व होती है ना। तो कैसे होती है? दिस कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, जैसे कि मार्बल, मैं आपको बता चुका हूँ घर के एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना? घर के फर्श पे अगर मार्बल है तो वहाँ एक एसिड डाल दिया थोड़ा सा, यू विल रियलाइज कि देयर इज एन एमिशन ऑफ गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में क्या होगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट के पास वाटर आता है ना, तो एंड दैट बेसिकली इज नॉट वाटर, इट्स हाइड्रोकार्बन एसिड, ये सॉरी कार्बोनिक एसिड, है ना। तो दिस बेसिकली लीड्स टू, ये जो CaO प्लस H2CO3 है, इससे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर, सॉरी CO2 वो भी बनता है। तो मुझे रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। तो इन दैट प्रोसेस द कार्बोनिक एसिड डज व्हाट, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और एक सॉल्यूशन बनाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म, और CO2 गैस रिलीज हो जाती है ना। जैसा कि हमने पीछे देखा था सॉल्यूशन में याद है, the lime structure which was there get dissolved in water, creating a cavity there, creating a cavity. बस वैसा ही यहाँ पर भी होता है in this process also, and this process is specifically related to the limestone rocks. ये वाली जो प्रोसेस है is specifically related to the rocks which have carbonate, which have got this carbonate ion, CO3 2 negative, है ना। जनरली इनके लिए they can be different form of carbonates. तो कार्बोनिक एसिड की वजह से ये कार्बोनेट टूट जाता है and leads to release of CO2 gas and the compound get dissolved in water. और क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो गया, तो now it will get carried away with the water, leaving a cavity behind, that is weather. तो चल रही है साथ साथ, और पीछे रह गया क्या? Weather. Right now in carbonation, the reaction of carbonate or bicarbonate ion, the reaction of carbonate or bicarbonate ion, carbonate or bicarbonate ion, इनकी जो रिएक्शन होती है ना, with minerals, different minerals, the reaction of carbonate or bicarbonate ion with minerals or with various minerals is the process of carbonation. Is the process of carbonation. Is the process of carbonation. Its example is the solution process. Its example is the solution process. Its example is the solution process where the atmospheric oxygen, mixes, where the atmospheric oxygen mixes with water to form carbonic acid. Not atmospheric oxygen, it's atmospheric carbon dioxide. Sorry, atmospheric carbon dioxide, CO2, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, that the water in atmosphere reacts with CO2 to form carbonic acid which is H2CO3, और ये H2CO3 रिएक्ट करता है लाइम के साथ टू दैट वापस से CO2 बनाने के लिए। तो इससे क्या होता है, मोलस्क सुना है? मोलस्क, किसी ने मोलस्क या कोरल पॉलिप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ आइडिया? यस, जानवी, हर्षिता, चैत्रा,
Do people know about mollusk or coral polyps? Loud. आतर भी है आतर. आज शांत कैसे? अच्छा नो. तो नो भी बोलना होता है. How would I know? You people don't know. Mollusk like वो species हैं in the water which are found in shallow water region and have a shell-like arrangement. है ना? Shell-like arrangement जैसे snail. है ना? तो इनकी जो shell होती है is made up of calcium carbonate. Then same goes with other. Even coral polyps have that calcium carbonate layer. ये भी these polyps are bonded together using calcium carbonate. So when they go deep into the water, हाँ दाऊ. सर वो स्नेल्स के ऊपर में जो हार्ड कवर रहता है वही mollusk. संख सुना होगा, संख वगैरह. यस सर. वो संख स्नेल का कवर ही है. दैट इज mollusk. हाँ वही. तो उन स्पीशीज को mollusk बोलते हैं जिनके पास ऐसा शेल होता है. उन सबको mollusk बोलते हैं. स्नेल इज एन एग्जांपल. mollusk की क्या है, किंगडम, क्लास, क्या बोलते हैं बायो वाले, बताओ. किंगडम है शायद mollusk that belongs to mollusk. हाँ kingdom. Right. CR you are also from bio. अच्छा कुछ पूछना है फिर और भी कोई था वास्तव. You people were trying to write something. If you want to ask anything, you definitely can, right? Okay. तो बेसिक आइडिया ये है कि जब भी वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है, जब भी वाटर अंडर हाई प्रेशर, it gets react with the calcium carbonate to form CaO plus CO2 plus H2. और इससे क्या होता है, the carbonate converts into this calcium oxide, है ना? And this is not soluble in water and settles down and settles, right? तो ऐसा ही होता है उसमें ओशंस में कि mollusks are generally found on shallow waters. Lime है ना? तो शेलो वाटर से मिलते हैं. अगर वो डीप वाटर में होंगे तो उनकी शेल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में और वो डिपॉजिट हो जाएगी ओशन बेड पर और ये मर जाएंगे. That's why even the corals are not found in deep water. Usually, even the corals are not found in deep water. Corals मैं पढ़ाऊंगा जब environment में आएंगे. Then I'll tell you more about corals and coral reefs, coral polyps. अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. So the whole idea is to tell you कि जैसे ही limestone, जो lime rocks या calcium carbonate rocks हैं, when they come in touch with this carbonic acid of water, so they get dissolved in it, and they get carried away. तो अगर किसी रॉक का ये पार्ट थे या पूरा रॉक लाइम का था, तो just get dissolved in water and get carried away, leaving behind a cavity, जो कि further weathering में help होगी, right? यही है process of carbonation. I hope the thing is clear to you people. Yes. तब मुझे नहीं आया समझ. जो पहले मैं अपना एग्जांपल यूज करता हूँ, फिर बाकी आप लोग समझेंगे. Samriddhi, you want me to repeat which example? Carbonization का. Like I took the example of coral polyps. I took the example of अच्छा solution तो हो चुका ना. Solution process में ही तो मैंने समझाया था that if there is a limestone based rock, so the limestone has tendency to get dissolved in water, यानी पानी के अंदर घुल जाने की tendency होती है limestone की, है ना? तो अगर limestone rock में पानी आएगा तो वो उसे घोल लेगा, make a solution with the limestone and फिर carried away, और पानी उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा. सर हाँ समझ.
सर अभी आपने एग्जांपल बताया ना, सॉल्यूशन प्रोसेसेस वेयर द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्सेस विद वाटर टू, फिर उसके बाद क्या है? अच्छा वो बोलना है अभी, ठीक है। वेयर द ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, मैंने उसको करेक्ट भी किया था, CO2, वो ऑक्सीजन नहीं है, CO2। वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, which is an active disintegrating agent of calcium carbonate rocks, है ना, to form carbonic acid, comma, which is an active disintegrating agent of calcium carbonate rocks, the simple carbonate rocks, magnesium carbonate नहीं, है ना, which is an active disintegrating agent of carbonate rocks, right? ये पूरा राइट अप था उसके लिए। Let me explain it again. Water is the playboy. His girlfriend is lying to the carbonate rocks, and she is living with her whole family in the rock structure. But their affinity is so much that whenever the water travels, the lime gets, they both elope with each other. ऐसी कुछ स्टोरी। वाशवा दत्ता सुनी किसने? वाशवा दत्ता, तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इतनी सी स्टोरी है कि वाटर एक ऐसा एजेंट है विच डिसॉल्व द लाइम और कार्बोनेट रॉक इन इटसेल्फ, है ना। तो ये जो पोल्यूशन, ये जो प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन है, इसका अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, लाइम और वाटर वाला, तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनेशन। इसी प्रोसेस का नाम है कार्बोनेशन। जबकि सॉल्यूशन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन में जो पहले एग्जांपल लिया था वही कार्बोनेशन है ना। द एग्जांपल दैट आई टुक इन सॉल्यूशन रिगार्डिंग कार्बोनेट रॉक, वही एग्जांपल है सॉल्यूशन इसका, कार्बोनेशन का। जबकि सॉल्यूशन के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक इफ देयर इज अ सॉल्ट रॉक and water travels, so water can dissolve that salt and take it away, leading to weathering. Weathering क्या है? टूटना, रॉक का निकल जाना, उसके कंटेंट्स का अलग हो जाना, that is weathering. So if anyhow a particle gets broken and is getting carried away, that is weathering. तो केमिकल वेदरिंग में बस यही, लाइक ये जो लव अफेयर आप देख रहे हैं, that is the only thing different from physical weather. That here the reaction occurs, that affair occurs, right? And then finally the eloping of both together, right? I hope it is clear to all. कोई ऐसा है who is not able to understand this after these many examples? जो बाकी के टॉपिक्स हैं, ओरल्स वगैरह, वो बाद में समझाऊंगा। Yes, like I'm not getting reply from Atif, from Janvi, Mriganka. What happened to these guys? Fatima, मुझे लगता है ये लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है क्लास में। अच्छा, लाइव। You got it, Mriganka? Rohit? Okay. Atif, what happened? ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस हमारा कार्बोनेशन। अब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, तो ये देखो, मतलब एग्जांपल्स यहाँ भी है, बट वो थोड़े से स्टीरियोटाइप वाले एग्जांपल्स हैं, तो मतलब उन्हें जजमेंट में मत ले जाना, बस यूज करना समझने के लिए। हाइड्रेशन क्या प्रोसेस है कि यू माइट हैव सीन कि अगर कॉपर सल्फेट है कहीं पर, तो इट कैन इजीली गेट एडेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये बना लेता है प्रोडक्ट्स लाइक जिप्सम, है ना, जिप्सम। तो यहाँ पर जो वाटर है वो घर जमाई का काम करता है। हाउ? लाइक इफ देयर इज अ कॉपर सल्फेट रॉक एंड द वाटर इज पासिंग नियर बाय, तो वाटर आएगा और यहीं रहेगा, अब यहीं रहेगा,
द वाटर हैज बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग रॉक, जो पहले से रॉक स्ट्रक्चर था उसके केमिकल्स में वाटर ऐड हो चुका है, राइट, वाटर इज नॉट लिविंग नाउ। ये हो गया गर्मी का एग्जांपल, राइट। द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन। और हाइड्रोलिसिस का क्या है, भाऊ वाला काम है, आके घर तोड़ देना, राइट, लाइक मतलब मैंने बोला स्टीरियोटाइप होगी, है ना। वाटर will be coming and dissociating the rock content into its ions, elements, right, dissociating the rock content into elements, ठीक है। अब बाद में हम डिस्कस करेंगे बाकी, अभी आप लिखो, राइट डाउन फॉर द हाइड्रेशन, फॉर द हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन, लास्ट वन, अच्छा लास्ट वन, हाइड्रोलिसिस में लिखवा रहा हूं ना, सहिस्ता वो लिख लो। Hydration is the process of addition of water. Hydration is the process of addition of water to minerals. Hydration is the process of addition of water to minerals, which causes changes in their volume. Which causes changes in their volume. Example लिख लो, अगर कॉपर सल्फेट में I add water, तो अगर कॉपर सल्फेट में हाफ H2O आयन ऐड हो जाए, this is POP, plaster of Paris, you might have read this in class 10th, और अगर दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हो जाए, .2H2O हो जाए, तो ये बन जाएगा जिप्सम, जिप्सम। हाँ, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है, देखो लाइक ये था, वॉल्यूम आके वाटर जुड़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो एडिशन ऑफ वॉल्यूम क्या करेगा, स्ट्रेस जनरेट करेगा, और ड्यू टू दिस स्ट्रेस वेदरिंग होगी। जिप्सम इज कैल्शियम, राइट, हाँ हाँ, लाइक सॉरी, मतलब इस पर्टिकुलर केस में, हाँ तो कॉपर नहीं है ना सर? हाँ हाँ हाँ, कॉपर नहीं, मुझे भी सॉरी अभी याद है। ओके ठीक है, चलो वो जो भी है, तो दिस इज जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, ठीक। एक बार आई हैव टू चेक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, हाँ कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम। तो इससे पहले पीओपी बनता है और इसी से बाद में जिप्सम। गॉट। ये बेसिकली कलर्स के लिए होता है, कॉपर सल्फेट इज नीला थोथा, द ब्लू इन कलर प्रोडक्ट, और जिंक सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, ये मुझे याद आया। No sir, iron sulfate is in green color. आयरन सल्फेट, Yes sir. Copper sulfate blue withdrawal, iron sulfate green withdrawal. ग्रीन विथड्रॉल, और जिंक सल्फेट, Sorry sir. अच्छा ठीक है फिर मैं केमिस्ट्री में भी भूल गया, तुम भी भूल जाओ। यहाँ पर आते, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट with half H2O is POP और with 2H2O is ये याद रख लेना कुछ कुछ, क्योंकि ना अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो वहां पर साइंस की इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक इट्स नॉट कि नहीं पूछा गया है, दे हैव बीन आस्क्ड ये कॉपर सल्फेट इज ब्लू विट्रोल बट इन CSD वाला, है ना। तो UPSC कीप ऑन चेंजिंग देयर क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ऐसा होता है, बट यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन हो गया, जिंक सल्फेट इज वाइट विट्रोल, एंड हाइड्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन बिटवीन मिनरल्स, केमिकल रिएक्शन बिटवीन मिनरल्स। अच्छा, हाइड्रेशन में लास्ट लाइन थी, एग्जांपल वाज कैल्शियम सल्फेट with the addition of water, formation of gypsum. We wrote in hydration addition of water to the minerals which causes change in their volume. Example, calcium sulfate. सफेद होता है, ठीक है, मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बहुत बहुत तो पता ही होगी आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्लूइड। अच्छा, माय फेवरेट वो हो गया, नहीं केमिस्ट्री वाज लाइक माय, हाँ
Hello, I hope I'm audible right now. Yes. Okay. हाँ, मतलब मैं बचपन में पढ़ा नहीं तो मेरा टेस्ट हो गया। मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पर हाँ, तो let's write down the hydrolysis process. Hydrolysis. So hydrolysis is the chemical reaction between the minerals and water, due to presence of H positive and OH negative ions. Due to presence of H positive and OH negative ions. Due to presence of H positive and OH negative ions between the minerals and water, the rock minerals है और water and water है. Between the rock minerals, it's a chemical reaction between the rock minerals and water. Okay. Due to presence of H positive and OH negative ions, due to presence of H positive and OH negative ions, comma, where exchange of ion leads to disintegration of rocks. Where the exchange of ions leads to disintegration of rocks. Where exchange of ions leads to disintegration of rocks. सपोज कोई कैल्शियम सल्फेट नाम की रॉक है और वो रिएक्ट कर जाए वाटर के साथ, तो इसका काम क्या हुआ है, तो H पॉजिटिव सल्फेट के साथ जोड़कर H2SO4 बना लेगा और OH नेगेटिव Ca के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. That's how the reaction takes place, or this basically leads to formation of new compounds, and ultimately होता क्या है, the rock which was there, calcium sulfate, is now disintegrated. तो हो गई इसकी बेहतरी, ये ना, like you need not to write these chemical reactions, ही नहीं लिखनी है. Write only that much जो मैं लिखवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, आपको पता होना चाहिए हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में एक लाइन क्या लिखनी है. That's it. Done. Clear to all, right? बस कोई और डाउट उसमें? No. So coming to the next topic, chelation. Chelation is basically about one single central metal element जो कि metal ion होता है and is get replaced, जिससे कि आसपास के सारे connected element टूट जाते हैं. He is like the Krishna between the gopis. कृष्णा को हटा दो, बाकी में disintegration हो जाएगा. So for chelation write down the complex organic process where the metallic cations are replaced by hydrocarbon molecules. यहाँ जो metallic cation है वो एक complex chelates आपने पढ़े होंगे, like those who had chemistry. नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. एक रॉक स्ट्रक्चर के बीच में एक सेंट्रल मेटेलिक एलिमेंट को रिप्लेस करकर अगर हाइड्रोकार्बन आ जाए, है ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, राइट. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब स्ट्रक्चर बदल जाता है, दिस रॉक लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक. बस यही प्रोसेस है चिलेशन. तो राइट डाउन इन चिलेशन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्रोसेस वेयर द metallic cations are replaced by the hydrocarbon molecules. Where the metallic cations are replaced by hydrocarbon molecules. Done.
आई होप किसी को इश्यू नहीं होगा इसमें, और बस जो इशू था वो यहीं तक था। केमिकल वेदरिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, लाइक बट आप जनरलाइज वर्जन भी लिख सकते हैं इफ यू डोंट रिमेम्बर, है। राइट, ओके। आते वो यार आवाज नहीं आ रही, कि नॉट फाइन की रीजन क्या है? नेक्स्ट, आई थिंक ही इज नॉट इन द क्लास, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर से गेट पर कोई आया हुआ है, हैंड आउट। बायोलॉजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में देखो, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ बायोटा, है ना। और बायोटा क्या है? फ्लोरा एंड फौना, पेड़ और पशु, हाँ, जानवर और पशु पक्षी। तो फॉनल, फॉनल हाँ, बायोटिक फैक्टर्स, इवन ह्यूमंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ वेदरिंग। तो पहले हम शुरू करते हैं फॉनल से। तो फॉर फॉनल राइट डाउन फॉनल। So in faunal type of weathering, basically, in faunal, the breakdown of rock occurs due to animals. The breakdown of rock occurs due to animals. Due to animals. Examples, burrowing. Yeah, burrowing. You might have seen a dog doing that rabbit digging. Digging. Now I got few answers from Janvi as well. Digging, right? So that particular thing is called as burrowing. So burrowing of land by not only by these dogs or rabbits, but even it is done by the earthworms. It is done by moles. It is done by owls. It is like there are other animals involved, like termites. वो भी बेचारे मिट्टी खाते हैं, है ना? And then okay, right? Earthworms, termites, rodents, rodents, obviously, rodents. Rodents. These all are involved in burrowing. Like even the rats or snakes do the same thing. They find a special place for their living. Like they make a whole like arrangement within the earth. देखा है कभी snake का या चूहे का that film? That hole they create for their living. Okay. Okay. And then for the plants, floral. So the floral weathering includes the penetration of roots for the plant. It is done by the penetration of roots by the plant. Secretion of acids. Plants do secrete some kind of acids. A question आया था, if I'm correct, it was in 2016 मेंस। टॉपिक का नाम था लाइक अलीलोपैथी क्या होता है, अलीलोपैथी। किसी को पता अलीलोपैथी क्या होता है? एनीवन फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड या बॉटनी या हॉर्टिकल्चर? कोई है ना? सहिष्णुता, द फर्स्ट लाइन वाज, इसमें टॉपिक्स मतलब मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं सिर्फ। The floral weathering is due to the penetration of roots of the rock into the rocks. Penetration of roots into the rocks, comma, due to secretion of acids. Those acids they help in ion exchange with the rocks, or finally rocks get disintegrated or destroyed. मतलब rocks टूट जाती हैं ion exchange की वजह से।
हाँ allelopathy क्या है पहले बताओ. How is this, like Janvi, basically these chemicals are so powerful that they react with the elements of rock, minerals of rock, और फिर वही ion exchange process. हाँ biochemical processes. Yes Samrit, they are like biochemical processes, which ultimately leads to weathering. So initially the biology works, the use of chemicals, and ultimately the chemistry works. The right. Okay. I hope this is done. Now the anthropogenic processes. Anthropogenic processes. You know, as in every other case we have, the anthropogenic cases, they have increased the rate of weathering by a significant level. How? So write down the anthropogenic causes. The anthropogenic causes have disbalanced the rate of weathering for humans, obviously. The anthropogenic causes have disbalanced the rate of natural weathering. Have disbalanced the rate of natural weathering by the processes like blasting. The construction of roads or railway lines in the mountains, we have to do the controlled explosions. Yeah? That basically involves the breaking up of rock. और एक बार initiation हो जाए तो the weathering rate become more faster. हाँ tunnels. तो होता क्या है, like अगर ये rock structure तो इसको weather कर पाना बहुत मुश्किल है. But once the weathering begins, inside वाले areas को weather करना काफी आसान है for the atmosphere. है ना? तो the humans do the same. They remove this layer and expose this one so that weathering occurs faster. This is done by the processes like blasting, explosion, construction activities, mining, blowing and cultivation. Blasting, explosion, construction activities, mining activities, plowing and cultivation. जो हम land पर plowing करते हैं ना, especially in the rocky areas, जहाँ पर agriculture होता है. That is again the same concept. वहाँ पर भी हम weathering ही कर रहे हैं, we are promoting weathering, the plowing and cultivation, etc. Like ह्यूमन जो weathering कर रहे हैं उसका रेट आप इस बात से पता लगा. Sorry, I think there was some glitch again. Maybe today we have some issue with internet. So I hope now I'm audible and yes, I'm visible in a while. Now visible to me. Oh, so let's move on. So anthropogenic causes we have done. So I was telling you people a fact. The Supreme Court has acknowledged that more than 1,200 hills have disappeared in the Aravallis between this, like Delhi and Alwar, like between Delhi and Mount Abu.
और इसके ऊपर न्यूज आर्टिकल्स भी मिलेंगे। एंड दिस इज बेसिकली डन फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। वहां पर माउंटेन्स को निकालकर those rocks are used for construction activities, and then the new land area developed is used for due to floor marbles and lot many other, even there are developed like tiles are being made from that, है ना। तो और भी बहुत कुछ from those, the roof material is often like, you might have seen the roof made up of rocks, है ना, कुछ इस तरह का बोलते हैं, सिंपल प्लेन स्ट्रक्चर होता है, and these are created over the pillared structure, over the iron rods। तो कुछ स्ट्रक्चर बोलते हैं, मुझे याद नहीं, lented beam स्ट्रक्चर कुछ ऐसा कुछ, है ना। तो there is also और भी बहुत तरह के अरेंजमेंट है when the rocks are used in construction activities, right? तो the rocks are being exploited for that purpose, leading to disappearing of many rocks। और इसका आर्टिकल्स अवेलेबल है, लाइक आप गूगल टाइप करना disappearance of hills in the Arabians, बस पर आपको पूरे आर्टिकल्स मिलेंगे that how the land mafia or the construction mafia have done illegal mining in this belt of Arabians। Okay, अब आगे बढ़ते हैं। तो we have done with the weathering now, like we are done with all types of weathering, physical weathering, chemical weathering, biological weathering। So like now you can, I hope these are all are clear to you। even river sense, अभी एक बहुत recent case है, MP में एक SGO है, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। She was confronted by hundreds of villagers who were involved in sand mining, and she had to run away from that location। And this is in location Morena। I think अभिषेक को तो पता होगा। अभिषेक, हाँ अब बोलो, मैं एक बार बोलूं फिर बोलो। हाँ बोलो दादा। यस सर। तो नाम सर वो एंथ्रोपोजेनिक जो है ना सर, वो टर्म मतलब सब कुछ समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आया बस। जैसे है ना टर्म मतलब पहले भी शायद बताया हो, एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो द्वारा जनरेटेड, यानी ह्यूमन जनरेटेड बाय ह्यूमंस। ये जो वर्ड है ये ऑफन यूज होगा उन एक्टिविटीज के लिए जो ह्यूमंस की वजह से हुई, बिकॉज ऑफ ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली ह्यूमन के इवोल्यूशन का सब्जेक्ट है। हाँ सोनिया मीना, ओके, नहीं सोनिया मीना नाम नहीं है शायद, साक्षी पांडे नाम है फिल्म का, जानवी साक्षी पांडे या साक्षी मिश्रा ऐसा कुछ नाम है, एक बार चेक करना। ओके, तो जो भी है, आई होप नाउ दिस ऑल क्लियर। अगर वेटिंग में कोई भी क्वेश्चन हो, यू डेफिनेटली कैन आस्क। हाँ दाऊद, लेकिन भाई दाऊद तुम्हारे नाम के तो चर्चे हैं दुनिया में। ठीक है, लाइक देखो, ओके इब्राहिम गुड, हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है, लाइक ये स्टीरियोटाइप्स है जो सोसाइटी में अपने आप डेवलप हो जाते हैं, है ना। कि राम नाम का व्यक्ति है तो बढ़िया ही होगा, सीता नाम की लड़की तो अच्छी होगी, राइट। तो इस तरह की चीज स्टीरियोटाइप्स है जो कब गलत साबित हो रहा है आपको नहीं पता, ठीक है। इसलिए बिफोर मेकिंग राम योर बॉयफ्रेंड थिंक ट्वाइस। तो आगे बढ़े, नाम क्या है सर, इंसान, हाँ ऑब्वियसली, लाइक ये तो हम काफी समय से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी अच्छे आदमी की बात सुनो तो ही इज ऑलवेज ऑफ दिस व्यू ओपिनियन that it is the work of man, it is the efforts of man who made him
or who gives him the recognition. Okay, so weathering done. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे and we'll be now seeing the landforms which are created due to weathering, है ना? कि like different weathering agents जो हैं या geomorphic agents जो हैं, एक वाटर एजेंट है ना, एक एजेंट एयर है, लाइक वाटर में फ्रेश वाटर रिवर एक एजेंट है, सी वाटर एक एजेंट है ना, देन एयर एक एजेंट है जिसकी वजह से विंड, देन ग्लेशियर्स एक एजेंट है ना? तो we will be watching the what kind of landforms that can be formed, what kind of landforms can be formed due to erosion, due to transportation and due to deposition of sediments. ये तीन मेजर प्रोसेसेस हम सीख करेंगे कि ड्यू टू इरोजन यानी मटेरियल का टूटकर अलग होना, ट्रांसपोर्टेशन गेटिंग कैरीड अवे, और डिपोजिशन उसी मटेरियल का वापस दूसरी जगह पर कलेक्ट हो जाना, है ना? एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ले जाने की क्षमता कितनी है. That's how the deposition or erosion gets decided. तो इनके बेसिस पर जो भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है सर, मंडे को इतना बोरिंग हो जाता है. हाँ, कुछ तो मुझे भी लगता है ऑब्वियसली सुन, बट ठीक है, लाइक समटाइम्स यू हैव टू लाइक देखो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. although I try not to be boring, but you know, हाँ. तो वापस आते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स. फ्लूवियल लैंडफॉर्म, तो ये पहला प्रोसेस है which is basically the fluvial, you know, the flowing water, the landforms which are formed by flowing water. तो यहाँ पर हम खुद को लिमिट करेंगे the landforms which are formed by rivers, largely with the rivers, right? So how the rivers lead to creation of various landforms, है ना? They basically have high energy when they are in the upper stage. Then when they come in the plains, उनकी energy धीरे धीरे कम होती जाती है, and ultimately their energy gets almost finished when they reach the lower levels or the lower course of river, right? तो पहले मैं आपको like I'll be telling you about the whole process, the how the river flows, है ना? What basically ये वैसे तो आपकी ज़्यादा काम का नहीं है, but this will understand, like this will make you understand how the cycle of erosion works. Cycle of erosion, और जो ऑप्शनल वाले हैं वो झेलेंगे, बट हमारे लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट ये है कि ये सब कैसे बिगिन होता है, कैसे आगे बढ़ता है और कैसे वापस उसी तरह से काम करता है. It goes in a cycle. That's important. So it all begins with the formation of mountains. The mountains do get water from where? Like the major source is rainwater, rain, right? For the mountains, the major source is rainwater. छम छम बारिश, like क्या छम छम बरसा पानी, और यहाँ से the water gets collected into various streams. तो ये है upper course, ये है middle course और ये है lower. इनको हमने टाइम स्टेजेस से बांटा हुआ है. यंग स्टेज यानी कि जब आप यूथ स्टेज में होते हैं तो आप काफी क्रियाकलाप करते हैं. यस, आप लोग भी कर रहे होंगे. व्हेन यू कम इन दैट मीडियम स्टेज और द मिडिल स्टेज ऑफ लाइफ, तो आप काफी शांत हो जाते हैं. अरे कर रहे होंगे अमित, ऑब्वियसली. When you come in the middle stage of life, तो आप काफी शांत हो जाते हैं. And when you come in old stage, तो आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जो हो रहा है होने, right? So in the upper stages, like in the youth stage of life, you have good amount of energy. So it's up to you कि आप उसे कहाँ लगाते हैं. आप चाहें तो उस एनर्जी का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं. नए दोस्त बना सकते हैं या उसे पढ़ाई में लगा सकते हैं. Obviously, you have that high velocity, and you can take it to any direction you want. Same goes with the river. River की बहुत सारी streams हैं,
तो इन द माउंटेन्स दे हैव वेरी स्टीप स्लोप, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप होता है। तो व्हेन द वाटर कम्स डाउन इट हैज गॉट ग्रेट एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है पानी के पास जब वो खड़ी चढ़ाई खड़ी ढलान पर उतरता है। तो दिस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विद वाटर गिव्स इट द पावर टू कैरी मोर सेडिमेंट्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर चल सकता है वाटर इस पर्टिकुलर एरिया इन द माउंटेन्स, है ना। तो एंड दीस सेडिमेंट्स दे हैव दैट पावर टू इरोड फर्दर। सपोज यहाँ पर कोई रॉक थी, है ना, जैसे यहाँ पर चले, यहाँ पर कोई रॉक ऐसे निकली हुई है और पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो वाटर विल इरोड दिस रॉक and take the sediments with itself because it has high energy. It can carry more sediments. जैसे आज आप लोग, you can do more work today because you are in a huge stage of life, है, right? So now you have that potential to carry more weight, but as soon as there is a strike at the middle stage, तो slope का जो variation है वो एक sudden variation आता है, sudden variation। और जैसे ही यहाँ से अपर स्टेज से मिडिल स्टेज में आती है रिवर, तो यहाँ तक इसका पावर था इरोजन का। इरोजन मेन काम क्या था? इरोजन। यहाँ पर आते ही इन द मिडिल स्टेज द रिवर विल हैव लो एनर्जी एंड द सेडिमेंट्स विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। सबसे पहला डिपोजिशन यहीं पर होता है इन द फॉर्म ऑफ अलुवियल फैंस। अभी बताऊंगा अलुवियल फैंस या अलुवियल कूल्स। फिर the river has low energy तो it cannot go in a straight line path, तो फिर left right that meandering course of river, right? बाकी आप समझ ही गए हो। So that left right हाले वाली condition में river चलती है, and the meandering is the very like it is the mature stage of river where meandering is a characteristic, and ultimately the river reaches in the old stage where the only thing river can do is to flow, to take the water over a very low gradient, यानी बहुत कम स्लोप होता है, और बस पानी को ले जाकर धक्का मारकर समुद्र में गिराना है। That's the only thing it can do. जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं और अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे लेवीज भी बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, आईएस बन जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं in the mature and old stage. So this is the entire process. अब फिर यहाँ पर रिवर खत्म हो गई, अब हो सकता है यहाँ पर कल को फिर से माउंटेन स्टार्ट हो जाए, तो ये फिर से ह्यूज स्टेज में आ जाएगा और फिर मैच्योर और फिर तो this becomes a cycle. This becomes a cycle. Yes, I hope the life of river is clear to you, and this is same as the human life. In the initial stage you have very good energy, then you become mature, you become part of a structure, and then finally you cannot do anything. Like, it's not you cannot do anything, but you just resist that resistance of not doing anything, वो काफी बढ़ जाता है। हाँ, तो हमेशा समरी ये है कि जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होती है तो वो काफी हाइट से उतर के आती है, तो स्लोप बहुत ज्यादा होता है। स्लोप है ना, स्लोप जानते हो। तो जब बहुत तेजी से उतर के आती है तो यहाँ जो भी रास्ते में मिलता है दे गॉट कैरीड, उनको साथ में ले लेती है, चलो। और जब वो यहाँ पहुंच जाती है तो वो एनर्जी सडनली कम हो जाती है, क्योंकि स्लोप कम हो गई। पहले तो स्लोप ऐसा था, अब स्लोप ऐसा, तो एनर्जी कम हो गई, तो पार्टिकल जो है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर रिवर यहाँ से आ जाती है यहाँ। तो यहाँ क्या काम था रिवर का? सेडिमेंट्स को इरोड करना, जितने भी यहाँ पार्टिकल्स हैं उन सबको इरोड कर करके लेके आना और यहाँ करेक्ट, और फिर यहाँ रिवर बहुत धीरे धीरे फ्लो करती है और जो सेडिमेंट्स लाई है उन्हें डिपॉजिट करती है और यहाँ पर फर्दर स्लो हो जाती है और फाइनली समुद्र में गिर जाती है। तो ये इसका मैच्योर स्टेज है, ये इसका ओल्ड स्टेज है और ये इसका न्यू स्टेज है। यू कैन सी, है ना, आपने जनरली वाटरफॉल्स देखे होंगे, हाँ, लाइक रैपिड्स देखे होंगे, हाँ, दोस्त पीपल हु हैव डू लाइक ऋषिकेश वगैरह में कुछ रैपिड्स हैं, हाँ। Then at various other locations we have waterfalls. अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर गए होंगे, यस, अपने हनी के साथ, राइट? People used to visit ना,
अपना शहर लेके। राइट, तो बेसिकली दिस इज सर, इट्स मींस रिवर्स आपने ओरिजिन से फुल स्पीड में होता है, लाइक इट इज अ कंपैरिजन। Okay, I hope I'm audible. I hope I'm audible. Yes. Too many obstructions today. Right, guys. Obviously. Because weather is not good. Achha, I cannot see the weather from here. Maybe. Okay. So is this condition, this life cycle of river is clear to you people? Yes. Is this entire life cycle of river is clear to you people? क्या मुझे इसे दोबारा समझाना है किसी को? Okay. Yes, sir. पर वो ओरिजिन जहाँ से, जैसे गंगा का शहर गंगोत्री, वहाँ पे वो मैक्सिमम स्पीड में होता है क्या? डिपेंड्स स्लोप कितना है। ये बेसिकली हम एक जनरल ट्रेंड लेते हैं, है ना, कि अगर गंगा का जो ऐसे रिवर निकल रही है तो हो सकता है कि कहीं पर स्लोप ऐसे हो जाए, तो स्लो मैक्सिमम स्पीड तो यहाँ होगी ना। इट डिपेंड्स कि एट पर्टिकुलर प्लेस स्लोप कितना है, राइट, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्लोप, राइट। जहां गंगोत्री निकलती है वहां स्लोप इतना ज्यादा नहीं है, बट एज इट फॉल्स डाउन द माउंटेन्स, जैसे ही वो पहाड़ों से नीचे गिरती है उसका जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड द वेलोसिटी इज वेरी वेरी फास्ट। एंड दिस यू कैन विटनेस इन हरिद्वार, जहां पर ऋषिकेश पहाड़ों से निकलकर the Ganga comes into the plains of Haridwar. It has got very good velocity, very like fast velocity. Like मैंने तो यहीं पर देखा, you people might have went further, huh? कोई ऊपर और गया है, the northern hills.
तो like the landforms are generated because the running water, usually यहाँ पर हम river की ही बात करेंगे. These landforms can be generated due to the erosion, due to abrasion, transportation, and ultimately deposition. So we'll be dealing with each one of them with time, right? So first let me tell you कि जो rivers हैं वो क्या क्या बनाते हैं. So in the initial stages, when the rivers are coming down, they create V-shaped valleys. V-shaped valleys. Why V-shaped valleys? You know, like someone is writing. Why V-shaped valleys? Like, थोड़ा सा logical है. Why the rivers are creating V-shaped valleys in the upper mountain ranges? Yes. Gorges due to lower velocity and even rock variation. हाँ. Yes, the rock variation भी एक factor है. But you know, जब rivers यहाँ ज़्यादा slope पर होती है, so they lead to creation of these V-shaped kind of valleys, right? These V-shaped kind of valleys. अगर ये कोई स्ट्रक्चर है माउंटेन का, तो इस तरह के स्लोप पर वो वी शेप वैलीज बना लेती है. ये जो वी शेप वैलीज है, एंड दीज वी शेप वैलीज आर ऑल बिकॉज कि द रिवर हैज गॉट हाई लोड. उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, जैसे आपके ऊपर. These load is nothing but the sediments, and these sediments they increase the rate of erosion. Increase the rate of erosion. और इस erosion की वजह से the erosion in depth is more than in the width. यानी कि depth wise erosion ज्यादा होता है और width wise erosion होता है कम, which leads to creation of V-shaped valleys. V-shaped valleys. Clear to all? Rivers create V-shaped valleys in their upper course. फिर यहीं पर क्रिएशन होता है रॉक फॉल्स. सपोज करो एक रॉक है जो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो रॉक्स हैं they are weak rocks and this is resistant rock. So water will come and erode this weak rock and ultimately lead to creation of waterfall. Yes, examples of waterfall in India. So many examples. Jog Falls on Saravati, Chadwick Fall, yes. Campty Falls in Mussoorie, Chitrakoot Falls in Chhattisgarh. So many waterfalls in India. Kundru Falls in Jharkhand. और फिर ये नर्मदा पर क्या नाम है इसका, दूध, कपिल धारा एंड धुआंधार. हाँ, कपिल धारा, धुआंधार, दूध सागर फॉल्स. There are so many falls in. Acha, tomorrow I will give you the homework. Tomorrow you have to tell me which is the highest fall in India, which is the highest waterfall in India. ठीक है? अभी Google मत करो, कल पूछो. No, it's not job fall. It's not the job. No, it's not Kunchikal. कल पूछेंगे. कल ही बताओ. Okay. So the lower elevation streams merge to flow down the gentle slopes. तो जब यहाँ पर क्या होता है कि अब now the rivers are not having very fast velocity. तो rivers do merge, tributaries आकर के यहाँ merge हो जाते हैं, and then it has enough water to move ahead. जब यमुना आकर गंगा में मिलती है, then it gets the enough water to move ahead. Otherwise it doesn't have enough water. ये अलग बात है कि यमुना में पानी छोड़ा हमने, but it is the water of Yamuna or Ghagra or Son or Gandak or Kosi which helps Ganga to become the longest river in India. Yes, the tributaries, and these tributaries they usually come to meet the main streamhead in their middle course, so in the lower elevation course, right? And यहाँ पर meandering is the major tendency. और यहाँ पर distributaries बनती हैं.
distributaries. The river gets distributed into various tributaries, और बीच में island creation, क्योंकि यहाँ पर the gradient जो slope है वो बहुत कम है, तो होता क्या है, if this is the river, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर ना डिपोजिशन हो जाएगा सेडिमेंट्स, तो अब यहाँ से दो रास्ते बने, फर्दर डिपोजिशन होगा तो यहाँ से दो और रास्ते बने, तो बीच बीच में डिपोजिशन होता जाता है रिवर के पार्टिकल्स का, एंड द रिवर गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ऐसा देखने को कहाँ मिलता है, इन द लोअर रीचेस ऑफ रिवर नियर द कोस्टल एरियाज, नियर द कोस्टल एरिया। मियंडर एक नदी का नाम है बेसिकली डाउट, दैट इज इन यूएस, और वो रिवर जो है वो इस तरह से ट्रेवल करती है, इस तरह से, है ना। और जस्ट यू माइट हैव सीन कि प्लेन्स में ऐसा होता है, इवन गंगा और यमुना और इवन अदर रिवर्स इन इंडिया दे टेक दिस कोर्स। तो इस प्रोसेस को, ये जो ऐसे रिवर फ्लो करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियंडरिंग या ऑक्सबो शेप भी, ऑक्सबो शेप, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम ये जो जितने भी फॉल्स, लाइक जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, इन्हें कल डिस्कस करें। यू कैन इवन visit them by tomorrow if you want, not physically but virtually, right? जैसे कि गॉर्जेस, ये है, ये meandering, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं meandering, है ना। ये है वी शेप वैलीज, वी शेप रिवर वैलीज, ठीक है। और ये फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल है, प्लंज पूल्स हैं। Can you please check my mail? Okay, I'll check. Okay, I'll check. Sir, मैं आपको भी कॉल कर सकती हूँ। हाँ, you can call. You can call after few minutes, definitely. तो अभी किसी का कोई डाउट है, like if you want to ask anything, we'll be doing this much today. Like people are not very active today. What happened? Sir, मैंने भी mail किया है आपको। अच्छा, I'll check all those mails today. I'll check all those mails today. Sir, please check. हाँ, I'll check it. अच्छा, मंडे संडे वाला, लाइक यू हैव दैट, क्या बोलते हैं सर, often forget those words. Momentum, the issue of momentum, hangover of structure, ज़्यादा हो गई संडे, influence of Sunday or Monday. Like some people here, maybe CR, Ate, Janvi, even Amit was quite, he was not very active today. Megata, Sangi was also not active. Likita was not active. क्या चाहते हो सर? यहाँ पर भी कुछ एंटरटेनमेंट करते साथ। I was just okay. Okay then. Like an interactive session is better, where I come to know that okay, I have to go in this way. So if I don't know, like you people know it or not, then it becomes a bit of boring. अच्छा, इनको ये आता है या नहीं आता है. Okay, that's good. That's good. Okay then, finally we can say thank you. Yeah, maybe you felt that way because we didn't do maths. अच्छा. Okay. Okay then. Okay then, take care of yourself too, and we'll be meeting tomorrow at the same time, and we'll try to be more active, right? Up Sunday, that's why. Okay. Have a nice day.